Hey guys, what's up and welcome to episode 31 of Scarlet Nexus. अभी हम फेज 10 खत्म करके बैठ चुके हैं एंड ये स्टैंड बाय है फेज 10 के बाद का। अभी फेज 11 स्टार्ट होने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कसाने टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाती है एंड वकाने से मिलती है। तो वकाने यूइतो की मॉम है एंड कसाने की काइंड ऑफ फॉस्टर मॉम है। ओके, तो वकाने ने इसको बोला कि उसने एक तरीका सोच रखा है जिससे कूनार्ड गेट जो ब्लैक होल बड़ा सा बन रहा है एंड अर्थ को जो डिस्ट्रॉय करने वाला है उसको वो समहाउ रोक सकती है। उसने बताया नहीं कैसे रोकने वाली है, बट कसाने से वापस लेके आ जाती है प्रेजेंट में एंड उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और फिर वो फेज 10 खत्म हो जाता है। तो अभी हम फेज 11 चालू करने वाले हैं एंड वही जो कूनार्ड गेट का जो भी प्लान है उसके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फेज 11 एंड देखते हैं वकाने का क्या। वकाने इसकी मॉम है, ये रही। देखते इसका क्या प्लान रहेगा। I'm fine, and we have to hurry back to the Kunad Gate. We're going back there again? Do you know what we can do about it, Mother? Yes. We must get rid of the entanglements in the Kunad Gate, or the world will eventually be destroyed. Entanglements, ये क्या है? Entanglements? What are they? उनको किसी को नहीं We पता। should head to the Kunad Gate before I explain it further. Okay, then we'll go to the Kunad Highway. Everyone get ready. Mom, you can have a seat here. Thank you. You got so big. Huh? That was sudden. You joined the OSF. How's Kaito? Are you getting along with your older brother? चलो He's good. We don't really get along anymore. Oh. Can you tell me what's happening in your time, in the present? ओके, तो वापस कूनार्ड गेट के पास जाना है हमें। And that's basically it. The only other thing is the existence of the Kunad Gate. Thank you. Along with Babe's data, I think I understand a lot now. Are we almost ready to leave? Oh, yeah. अच्छा, बेब ने अपना पूरा डेटा ना वकानी के दिमाग में ट्रांसफर कर दिया पास्ट में। You're just like your father. जो Huh? No. Kaito is the one who looks like Dad. Actually, people tell me I'm not much like him. I'm not talking about your face. It's how you act. Yuito, about your father. I'm sorry I didn't tell you what he was doing. He did awful things, but it was him that saved me from Togetsu. He was kind. Kaito said he would change this country too. He's wanted to be a politician ever since he was little. But I guess he could only take your father's path as well. Kaito did, but It's all right. I know you'll make up someday. Right. ओके, चलो फाइनली इनका ख़त्म हो गया जो भी बात कर रहे थे। अच्छा, तो आपको बताऊंगा बेब का जब हमने डेटा इरेज किया था, मतलब उसने खुद ही इरेज कर दिया था, हमें ऐसा लगा था, बट उसने एक्चुअली पास्ट में वकाने को भेज दिया डेटा, क्योंकि वकाने के पास भी रेड स्ट्रिंग्स है जो कि यूइतो के पास एंड कसाने के पास है। रेड स्ट्रिंग वही पावर्स है जिससे टाइम कंट्रोल होता है। तो बेब ने सारा डेटा उधर भेजा जिस वजह से वकाने को काफ़ी सारी चीज़ें पता है जो प्रेजेंट में हो रही है। ये एग्जैक्टली पता नहीं है वकाने ही है कि बेब ने इसके दिमाग का कंट्रोल ले लिया है, वो भी पॉसिबिलिटी है। You said something about entanglements? Ultimately, Yuito and Kasane have to enter the Kunad Gate and unravel the entanglements. ओके, What I'm telling you here is just a concept. The traces interfering with time should look like tangled red threads. According to Togetsu's theory, Acha. whenever you jump through time, a dimensional hole like the Kunad Gate is created, but it should then disappear. The reason this hasn't disappeared is because Yuito and Kasane's powers resonated. The Kunad Gate is different from the theorized gates in that it's persisting in a distorted state. Using a distorted gate for a time jump creates entanglements. If you can unravel those entanglements, you can close the Kunad Gate. Distorted. I don't really get it yet. But when you say enter the Kunad Gate, do you mean go into that hole in the sky? That strange space. You saw it too. Oh, that place with all the weird images? That's right. That strange space that Kasane mentioned exists inside the... It is a concept of space that only exists for those with the red string's power. Togetsu called it the Chronos Terminal. Chronos Terminal, okay.
Perhaps it's a kind of station or junction point. So only Yuito and Kasane can perceive it. I guess that explains why we didn't notice it when we jumped to the future. When there is time contact between 2020, when the gate was made, and another time, entanglement. Time contact? It's a broader definition of time travel. Even if you don't arrive at that time, even if you just attempt. Basically, if someone with the red string's power even touches that time, there is a trace. That is time contact. The only way to actually see which times have entanglements is for the two of you to... So I guess the only thing we can do is leave it to Yuito and Kasane. Even if we find the entanglements, we won't know how to unravel them. The Chronos terminal is conceptualized by your powers, so you'll know how to unravel. Not with reason. Also, I'm weak, but I can use the red strings, so I'll... Okay, so we just need to use the red strings. I'm going with you. You don't know what kind of dangers will be there. Make sure you're ready. If it gets dangerous, Don't worry, we will. it's all right. All right, we don't have much time. ओके लेट्स गो. सो बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी कोई भी टाइम ट्रैवल करने का अटेम्प्ट करते हैं, मतलब सिर्फ टाइम ट्रैवल करने से नहीं, टाइम ट्रैवल करने से तो एंटेंगल्समेंट बनते ही है, उसके अलावा अगर कोई भी अटेम्प्ट भी करता है, जैसे कोई भी रजिस्टरिंग वाली जो भी पावर्स है, जैसे कसाने या यूई, तो ये लोग अटेम्प्ट करते हैं टाइम ट्रैवल करने का, या फिर मुझे लग रहा है कारण ने भी टाइम ट्रैवल किया, उसका मतलब उसने हमारी रजिस्टरिंग की पावर कॉपी की होंगी, तो इन सब से एंटेंगलमेंट्स बनते हैं. एंड जब ये एंटेंगलमेंट्स बनते हैं तो ये कूनाट गेट गायब नहीं होते. तो जो कूनाट गेट से ये नॉर्मली हर बार बनते हैं जब भी हम टाइम ट्रैवल करते हैं, बट ये अपने आप चले जाते हैं. बट कुछ कूनाट गेट जिसमें एंटेंगलमेंट्स बन जाते हैं वो गायब नहीं होते एंड वो समय के साथ साथ बड़े हो जाते हैं और काइंड ऑफ अ ब्लैक होल टाइप के बन जाते हैं. तो हमें घुस के एंटेंगलमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना है. अब पता नहीं वो एंटेंगलमेंट को डिस्ट्रॉय करना इतना ईजी होगा क्या. ये देखो, इधर देखो, रेड स्ट्रिंग्स लटके हुए हैं. ये यही है रेड स्ट्रिंग्स जो लटके हुए हैं ना. अच्छा, कूनाट गेट में घुसना कैसे है? यहाँ से बात करनी है शायद. Are you ready to go to the Chronos terminal? चलते हैं ना. एक सेकेंड, मैं सारे अपनी ये देख लूँ. मेरे पास हील, ठीक है, 9 हील्स है. ओके, ब्रेन फ्लूइड नॉर्मलाइजेशन, मैक्स हील जल्दी, ऑल ठीक है. हाँ, हील है काफ़ी, ऑलमोस्ट फुली है हील मेरे पास. निकलते हैं यहाँ से. तो सिर्फ कसाने और यूई तो रहेंगे, बाकी कोई आने नहीं वाला. उनकी पावर्स हम यूज कर सकते हैं क्या, देखना पड़ेगा. Focus your consciousness together. Picture the site of the Chronos terminal. To the Chronos terminal. We will unravel those entanglements. तो ये लोग गायब भी हो गए, ये लोग. ठीक है, मुझे लग रहा है एसएस की पावर्स तो यूज करते आनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो हमारे दिमाग से कनेक्टेड है ना, तो इन सब की पावर्स प्रोबेबली हम यूज कर सकते होंगे अंदर भी. बट पता नहीं, कूनाट गेट थोड़ा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो चांसेस है कि शायद ना भी कर सके. Are each of those images connected to different times? We can't just stand around. We have to search for the entanglements. I guess it's nothing new when it's your third time. So, how do we find them? This is... It must be Mother. Is she guiding us? Let's go! ओके. अबे अदर्स अंदर कैसे आ गए कूनाट गेट के? How are they inside the Chronos terminal? Calm down. That place is built from your consciousness. It's an imaginary world. It is a very unstable अच्छा place. ठीक है, तो ये हमारी इमेजिनेशन से बन रहा दस. Anxiety, all of your emotions affected. The memories of your past made others appear. So basically, you're saying that these others were created by our mental immaturity. That makes us sound pretty lame. But if we made them, we can take them down too. ये तो नॉर्मल वाले You एकदम. can handle it. ओके, अच्छा ये लोग ऐसे पावर्स तो हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात So if नहीं. our consciousness has made it, is this other an illusion? It sure looks real. As long as your brain thinks so, it's the same as if it was. We have to fight it.
Use my strength. बढ़िया चलो। अरे भाग गया ये। नाइस, ये बच्चा आखिरी, ये तो गया, मर गया। नाइस, चलो। और आने वाले एक इधर। हाँ, यप, और भी है। चलो बिगा दिया, चलो इन पे इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। नाइस। तो पानी से भिगाने के बाद शिडेन की इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर काफी बढ़िया काम करती है। ये लो बिजली। ये देखो, दो यूइटो दिख रहे हैं। ये क्योका की पावर की वजह से हो रहा है। तो क्योका के साथ हमारी बॉन्डिंग आई थिंक लेवल 3 हो गई है। तो लेवल 3 में पावर्स जो है उसके डुप्लीकेशन की पावर और बढ़ गई। तो पहले नॉर्मली ऐसे होता था कि हम जो भी चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं ना, वो डबल हो जाती है क्योका की पावर में। बट क्योंकि अभी बॉन्ड लेवल 3 हो गया है, तो हमारे क्लोन भी आ जाता है एंड वो काइंड ऑफ सेम अटैक करता है जो हम भी करते हैं। यानी कि अगर हमारे शॉट पे फायर लगी हो तो क्लोन के शॉट पे भी फायर लगी होगी। ये देखो दोनों पे इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, अभी गायब हो गया। चलो यहाँ से बड़े आ गया भाई। यहाँ पे तो कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं दिख रहा, एकदम खुला स्पेस है। उस तरफ जाना है कहीं पे। अच्छा, वकाने ने बोला था कि वो हमें गाइड करेंगी। ओके, आई थिंक ये फ्लावर्स को फॉलो करना है हमें शायद। हाँ, ये रहा बात। This is the old OSF hospital on that day in 2009. It's an entanglement. अच्छा, जब कसाने पास्ट में गई थी उसका entanglement है ये। Yeah, I don't understand it, but I can feel it. This is definitely it. If we want to successfully unravel this, then I'm betting that we have to use the red string. Yes, I feel it too. We should be able to make this work. Another one! Okay, Let's hold it off while we unravel the entanglement. I know we can do it. Right, Yuito? Yeah. वो पीछे वाले उसको मारना पड़ेगा सबसे पहले। Oil. Watch out for fire. Close. I'm not done yet. Okay, use it. Now I can take it easy. आधे तो निपट गए। लॉ Now. अबे मेरा ब्रेन ड्राइव भी चालू हो गया। लेट्स गो। अरे 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 अरे, लूका की पावर यूज करनी पड़ेगी। एक्चुअली वो जो तीनों एनिमीज थे वो कसाने की एबिलिटी से ही मर गए। वो जो मैंने ट्रिगर किया था, सारा सामान उठा के फेंका ना। बट मुझे लगा कि बचा नहीं है। मतलब मुझे लगा उसमें से एक बचा हुआ है, तो मैं उन्हें ढूंढ रहा था। बट एक्चुअली वो पहले ही मर गए। चलो एंटेंगलमेंट को तोड़े। एक अरे तीन है क्या इधर? बढ़िया, ठीक हो गया क्या सर? ओके, ये शायद ठीक हो गया। हमें और भी एंटेंगल्स ठीक करने पड़ेंगे। एंटेंगलमेंट्स। This will make the Kunad gate disappear. हो गया? नहीं। Hey, Kasane, that day, I never got the chance to thank you properly. So, thank you. What? पास्ट की बात कर रहा है। You were the one that saved me 11 years ago at the hospital. I remember it perfectly now. I used to be a dud, and then all of a sudden I had power. My power awakening? I think it was because you shared yours with me. What? Powers aren't something you can just Yeah, I know what I'm saying sounds silly, but if it were it was thanks to meeting you that day that I'm still alive, and have reached my goal of getting into the OSF. That's what I think. Thanks for saving me. You're welcome. Is that what I'm supposed?
You look totally I think it's unraveled now. Everyone is probably... Mother's power. मैं वही सोचा था इतना आसान तो नहीं होगा कुछ तो आ रहा है. There's more than one entanglement. Boss? If so, it's simple. We just have to unravel. Right. Okay. और entanglements है कि और boss है, चलो देखते हैं. We did unravel that entanglement, right? I think so. But something still feels off. So you feel it too. इधर आए हम कुनाड गेट के अंदर तो बिना बॉस फाइट के तो बाहर नहीं जाने लगे कुछ तो वो रहा और entanglements है ठीक है. There's another one. Is that 50 years in the future? That should be gone. हाँ ये This is the other that attacked Yuito. It's down. Give it everything you've got. ये 15 ईयर इनटू द फ्यूचर वाला एंटेंगलमेंट है यानी कि मुझे लग रहा है जो कसाने गई थी ना फ्यूचर में कसाने ने बताया था कि वो फ्यूचर में गई थी वो वाला एंटेंगलमेंट होगा. नाइस ये खत्म हो गया. Do you need help? It got me. Thanks, Nabi. उड़ने वाली इसको मारना पड़ेगा पहले उसके बाद बड़े वाले को मारेंगे. I need to support the injured. That attack worked. There must be a weak बढ़िया. I can hit it. Come on. Is everyone okay? अबे कसाने किधर गई? रिवाइव हुआ कि हुआ अरे ये हुई नहीं रिवाइव. जल्दी हो जाए रिवाइव उसके आने से पहले. बढ़िया. ओके. I need your help, Kasane. You guys good? I'll repay this in battle. बस अब इसको पेलते हैं. Let's go. डबल फायर अटैक. बढ़िया बहुत ही बढ़िया. ये तो खत्म ही हो गया लॉल. मतलब डबल क्योका की पावर उसके साथ हानाबी की डबल पावर तो डबल फायर स्वॉर्ड्स का डैमेज एंड इन सब के अलावा मैंने इसकी भी पावर ट्रिगर करके रखी थी. किसकी थी? लूका की. चलो बढ़िया. आई थिंक मैंने अराशी की भी पावर यूज की थी वो बीच में स्लो डाउन हुआ था एनीवे. I think that's all of them. Have you ever thought of what you'd do? You mean by traveling to the past? That would just create new entanglements. I mean, after the Kunad Gate is gone. If... Well, yeah. If I had done this or hadn't done that, something would have changed. अच्छा वो पूछ रही है कि तुम्हारे पास टाइम कंट्रोल वाली पावर है तो तुम कुछ और करना चाहते हो क्या? What should I have done? So, do you want to use the red strings to change the past? No. Yeah. No, I ये बोला don't. इसने. Because even if you change the past, you won't know how it will affect. मेरे हिसाब से कारेन का एक एंटेंगलमेंट भी तो होना चाहिए. वो किधर है? If he hadn't joined the OSF, if I mess with the past that much and just overwrite his life, is that really? And it's not just Nagi. If you change the past, it would. It's not something that one person can burden. I don't think it's right to only care about. There's a lot that I still can't accept. But it's not something that I can just ignore as if it didn't. I know it was a silly question. I'm actually surprised. Or maybe I'm just relieved. Because now I know I'm not the only one having these thoughts. Okay, कसाने सोच रही थी वो नाओमी को बचाएंगी पास्ट में जाके इसलिए वो पूछ रही थी शायद. I know what you mean. You know, we actually. I think it's a little early to say that. Yeah, कोई आया, I think. Finally the boss, probably. This is Mom's. There's still an entanglement? Yeah, एक और All the time entanglement. periods we travel to. No, now's not the time to think of. I'll be okay. I'm probably just. We should hurry. Okay, चलो ये probably कारेन का entanglement होगा क्योंकि You
only traveled to those 2 times, right? या ये कारण का एंटेंगलमेंट है पक्का, those are the only ones. क्योंकि सबसे पहला वाला वो टाइम था, वो ठीक किया था हमने जिसमें कसाने गई थी पास्ट में वकाने को लाने के लिए। दूसरा जो हमने किया वो वाला था जिसमें कसाने फ्यूचर में गई थी। वो हम एक्चुअली देख इसलिए नहीं पाए क्योंकि हम कसाने बन के नहीं खेल रहे थे, बट कसाने ने एक डायलॉग में बताया था कि वो फ्यूचर वाले यूइतो से मिली थी वगैरह करके। तो अगर हम कसाने बन के एक्चुअली खेल रहे थे तो वो वाला टाइम ट्रैवल भी हमने किया होता। एंड फिर ये थर्ड वाला पक्का कारेन का होगा। कारेन जो टाइम ट्रैवल करके गया ना, जनरल कारेन, वही है पक्का, और कुछ तो होने का चांस नहीं है। Isn't that... The Sumeragi crest. That's it. This is the image I saw at the start. Right. Yakumo Sumeragi's crest. It seems like a time entanglement appeared then. ये कारेन ही है पक्का कि कोई, हाँ कारेन ही है। What? How? Former Major General Karin. So they're going to keep coming. या We ये need to unravel the entanglement. ये बड़े अदर्स है, छोटे तो नहीं दिख रहे। ओए I'm watching out for you. Let's do it together. With everything. So, you need help? Let me borrow this. I can still fight. Time to use this. I need your help. We can't give up. That attack worked. That must be a weak spot. ओए ये दोनों चल रहे एक साथ। Good. Now I can take it easy. बढ़िया। Thanks, Kyoka. Thanks, Kasane. ओके, अरे यार मैं पावर अप कर रहा था, थोड़ा दूर से बात करना पड़ेगा। I can do this. बढ़िया। Good. Let me use your power. Time to fight back. ये दोनों एक एक मिनी बॉस जैसे, इसलिए थोड़ा सा टफ हो रही है। कोई नहीं, दोनों की आधी आधी लाइफ कम कर दी वैसे हमने। I can still fight. या में कुछ और होगा ना उठा के फेंकने के लिए, नहीं है क्या? ये लो, Get down. Give it everything you've got. बढ़िया। Some help, Luca. Let me borrow this. इसका खत्म है क्रश मीटर। चलो बढ़िया, एक गया। नाइस। Together. है, मैं लड़ते लड़ते बीच में एंटेंगलमेंट ठीक कर रहा हूँ। Here we go. Yeah. That attack worked. बढ़िया। That must be a weak spot. Don't get cocky. Close. Do what you want. बढ़िया। मर गया क्या? ओके नाइस।
थोड़ा इंटेंस था वो। Together. तो तीनों ही वो दोनों के दोनों मिनी बॉसेस थे काइंड ऑफ। अच्छी खासी हेल्थ भी थी उनकी। ठीक है, मुझे लग रहा है ये सारे एंटेंगलमेंट्स ठीक कर दिए प्रोबेबली। वे कारेंट टाइम ट्रैवल करके किधर गया है? अरे इसको क्या हो गया वापस? Yuito? This is bad. I don't think I can take much more either. So, did we do it? That should be all of them, right? Probably, but something doesn't feel right. Karen and Yakumo Sumeragi. कारण और याकुमो सुमुरागी के बीच में क्या कनेक्शन है? I'm blacking. अच्छा, याकुमो सुमुरागी यूइतो का एंसेस्टर है, एकदम काफी 2000 साल पहले वाला, जो अर्थ पे आया था एंड न्यू हिमुका रेजिमेंट को बनाया था, वो है याकुमो सुमुरागी। कारण का उससे क्या लेना देना है कोई आइडिया नहीं। कारण तो लूका का भाई है, मेजर जनरल कारण जो है बड़ा भाई। Where am I? वो दोनों कैसे रिलेटेड होंगे? याकुमो सुमुरागी 2000 साल पुराना वाला बंदा। It seems like we made it back. What's going on? The Kunad Gate. Why hasn't it disappeared? Well, Good job, you two. It's all okay now. What? But Mother, we unraveled the entanglements. So why? Leave the rest to me. Thank you for growing up so strong. You've made a lot of wonderful friends. Those connections are much more valuable than any red string. Treasure them for the rest of your life. Mother? इन लोगों को पता है उसका प्लान क्या है, हमें नहीं पता बस। प्रोबेबली ये खुद को सैक्रिफाइस करके कुछ बंद करने वाली, ऐसा ही कुछ होगा। you can't go back to the past. ओके हाँ If यही। you go back, Toketsu will. It has to be done. Forgive me. The longer I remain here, जो पास्ट में जा रही है शायद बस वापस। हाँ वो वापस जा रही है। No, hold on! There's still so much that I need to say! Mother! Yuito, Kasane, live on. Knowing you're happy is all that I could ask for. ओके तो कूनाड गेट आई थिंक अब बंद हो जाना चाहिए क्योंकि वापस पास्ट में चली गई। अच्छा पास्ट का हमें दिखा रहा है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हमें दिखाएंगे पास्ट का। टोगेत्सु वाले आ गए। अच्छा वो बेब So अभी today is the day. बेब को अपना डेटा वापस चाहिए होगा ना, इसलिए तो उसने पास्ट में भेजा वकाने के पास ताकि वो डेटा वापस ले सके, क्योंकि पास्ट में तो बेब अभी भी एक्टिव होंगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई होंगी जैसे प्रेजेंट में। पता नहीं क्या सीन है। ये खुद एक्चुअली बेब तो नहीं, मुझे वही स्टार्टिंग से लग रहा है। I may give you my brain, but you can't have my memories of the future. ओके नहीं ये बेब नहीं है। Yuito. अच्छा बेब ने बताया था कि उसके पास वकाने की मेमोरी है एंड वकाने की ब्रेन उसके साथ जुड़ चुकी है, तो ये ऐसे जुड़ती है एक्चुअली। तो ये हमें दिखाया गया है कि ये कैसे होता है। तो एक्चुअली वो एक टाइम लूप की तरह है, हर एक चीज़ एक दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई है। ये इससे इसलिए जुड़ती है क्योंकि ये फ्यूचर में जाके वापस आई है, तो एक्चुअली जो पुराने वाली वकाने भी थी प्रेजेंट में वो भी उसी वजह से जुड़ती हो। तो काइंड ऑफ एक टाइम लूप की तरह है, और जो टाइम ट्रैवल जैसे वर्क करता है ना, हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा करके चेंज कर दिया टाइम लूप को, बट वो सेम ही रहता है, वो चेंज होता नहीं है। ज़्यादातर जो भी मूवीज़ एनिम वगैरह निकले उन सब में ऐसे ही होता है, चेंज होता ही नहीं है वो। देखते हैं क्या होता है। The body has been confirmed as the target, Wakana. Current theory for cause of death is cerebral overload due to a malfunction in the personality rehabilitation device. We believe an irreversible memory wipe was conducted.
There is significant damage to the memory regions in her brain. Following protocol and retrieving her brain. ओके तो पास्ट में बेब के पास अभी फ्यूचर के बेब का इंटेल तो होना चाहिए. There was an entanglement from when Mom time traveled. Mother. She explained it to us earlier when the two of you were gone. The Kunad Gate wouldn't disappear as long as she was still present in the... We have a message she left for the two of you. ओके ब्रेन मैसेज में सेंड करेंगे. एक बार देखते हैं क्या था इसके मॉम का मैसेज. To Yuito and Kasane, I am sorry I have to part like this. I should have told you what I was trying to do, but I didn't. वगैरह I summarize what I told your friends. अरे to protect the history of Kasane Sumeragi dying. नहीं ऐसा. Okay, I'm going back to my time now. No, I should say that when I went back, there are 3 reasons. To protect the history of Kasane Sumeragi dying in 2009. ओके हाँ, क्योंकि वकाने सुमुरागी 2009 में मर चुकी है और वो अगर अभी यहाँ पे जिंदा रही तो वो हिस्ट्री काइंड ऑफ चेंज होएगा, मतलब टाइम चेंज हो जाएगा. टू एंश्योर द हिस्ट्री वेयर आई रिसीव द रेड स्ट्रिंग्स डेटा सेंट बाय टोगेत्सु. टोगेत्सु सेंट द डेटा टू मी बिकॉज दे savaged my brain and connected it to Babe. Okay, and so my brain has to be connected to Togetsu in 2009 to erase the entanglement I created. Okay, अच्छा ठीक है. तो अगर उसका दिमाग टोगेत्सु के साथ कनेक्ट नहीं होता तो वो एंटेंगलमेंट जो आखिरी एंटेंगलमेंट था जो उसके टाइम ट्रैवल करने की वजह से आया था. तो मैं आपको समझा दूँ 4 एंटेंगलमेंट कैसे है. एक कसाने जो पास्ट में गई थी पिछले एपिसोड में, एक कसाने जो फ्यूचर में गई थी काफ़ी पहले, उसने बताया फ्यूचर वाले यूइतो से मिली थी, एक जो कारण टाइम ट्रैवल किया वो, एंड चौथा जो यूइतो की माँ पास्ट से प्रेजेंट में ट्रैवल की थी पिछले एपिसोड में. तो वो चौथा एंटेंगलमेंट था जिसको ठीक करने के लिए उसे वापस पास्ट में जाना पड़ता. इज समवन विद रजिस्टरिंग पावर हु इज फ्रॉम डिफरेंट टाइम देन यू टू passes through the Kunad Gate and entanglement is created. As long as I try to pass through the Chronos terminal, the entanglement can't be eliminated, but my death eliminates the power and the cause, so the entanglement can be erased. This means that I have to carry out my life in my original time and plan. ठीक है. This will eliminate the Kunad Gate. What happens to the world after that is left up to you living in 2020. Please work with your friends for a better future. Yes, I know I must have hurt you both. ठीक है वगैरह वगैरह, हैप्पी वगैरह. ओके, यूइतो कसाने, आई विल ऑलवेज लव यू, वकाना सुमरागी. ओके नाइस. तो अभी क्या इन सबसे बात कर सकते हैं हम. एक बार देखते हैं क्या क्या बोल रहा है. Apparently the entanglement will unravel when Wakana returns to the past and dies. ओके. Wakana knew from the start that she was causing an entanglement. अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क किस पे आ रहा है? प्रोबेबली कसाने पे होगा एक्सक्लेमेशन मार्क जो है. She held back her feelings so she could part with you with no regrets. I'm sorry. I know this hits the two of you harder than anyone else, and I'm here. Hey, don't be so down. I'm not saying that because I'm worried about you. I said that because it affects Wakana wasn't from this time period, so her situation... ओके. लो, अरशी ने कुछ नहीं बोला. अच्छा गेमा बचा. I know she would have wanted to talk to the both of you some more, but she thought spending more time with you would only make things more painful. ओके, चलो रैप अप करते हैं फिर ये वाला मिशन. The feeling I had when we unraveled the entanglements 11 years ago was because Mother's entanglements still remain. That's strange. Wakana has returned, so how come it didn't disappear? Have all the entanglements truly been unraveled? कोई और बचा है क्या टाइम ट्रैवल? All the entanglements we felt we unraveled. The ones 11 years ago, 50 years in the future, and the one during Yakumo Sumeragi's time period. What? What does Yakumo Sumeragi's time period have to do with anything? I think one formed when we witnessed Yakumo's assassination. What are you talking about? Yakumo was severely injured in an accident, but he wasn't assassinated. We don't really understand it either, but we saw Yakumo Sumeragi being killed by Karin. What did you say? We were busy dealing with the entanglement, but yeah, there's no doubt in my mind that that was former Major General Karin. He copied Kasane's power. Yuito, if he also copied your power. But he didn't copy my... He could have time traveled by resonating Kasane's power with mine.
So it hasn't disappeared because of the entanglement Karin created when he traveled back to Yakumo's time period? But the two of you couldn't find an entanglement. How do you expect to unravel something you can't find? Karin can unravel his own entanglement. Yes, exactly. The only thing we can do is take Karin to the Chronos terminal and have him unravel the entanglement. Wataru, can you check Karin's location? I figured you'd ask, so I've been working on it. अच्छा कारण को खुद लेके जाना पड़ेगा उसका entanglement हटाने के लिए. That would mean he's in the past. That's where you're going to find. तो हमें past में जाना पड़ेगा, okay? Are you sure the people you saw were really Karin and Yakumo? We're sure. We could see their faces clearly. Actually, we only saw Karin's face. Yakumo का तो चेहरा नहीं दिखा. I mean, he had the same mask on as all the depictions of him. Ah, yes, that's it, the mask. That explains everything. Yakumo नहीं था, कोई और था क्या? Kagero, explain. Whoa, Sugumi, calm down. So, you know how Yakumo started wearing the mask because of the injuries he sustained? Rumor was, sometime after the accident, he suddenly stopped appearing in front of people and his whole personality just... Whole personality changed. The real Yakumo was assassinated by Karin from the future, and Karin took his place by putting on the mask? Lol. It doesn't matter. Either way, we still need to travel back to 2,000 years ago to check. Actually, no. We might not have to travel at all. You all saw my brother's video, right? Yakumo Sumeragi is alive! What are you... He is asleep. Deep beneath Suo. Yeah, हाँ इसका बोला था. He is waiting for his revenge. Cryo sleep में. Right. Cold sleep. Just like... If Yakumo is in cold sleep under Suo, then we can find out the... If former Major General Karin replaced him, then he'll be the one down there in cold sleep. Yep. वही पक्का. I'm not entirely certain as to why he did what he did. But we can talk to him and have him... Do we know where he's sleeping, though? I mean, Arahabaki is the only... I mean, Sumeragi Tomb is the first place I thought of where Yakumo would be. Do you think he would really be in such a heavily trafficked place? How about it, Yuito? It's your family. Sumeragi Tomb. Yep. That makes sense. तो उधर जाना है अगला. The head of the family is responsible for watching over Sumeragi Tomb. I might... The chief. Do you Actually, I've been trying to reach my brother's terminal, but I'm not getting through. Wataru, can you ask Major General Fubuki to talk to my brother? I doubt he'd... Okay, leave it to me. Wanna stop by our hideout then? I'm sure Yuito and Kasane could use the rest. Good idea. It would be smart to rest well. Thanks, Gemma. Guys, यार ये गेम के हर एक कभी एंडिंग के कुछ 3-4 फेज से ना हर एक फेज में कुछ ना कुछ खतरनाक ट्विस्ट आता है. Major General Fubuki. तो Thanks, Wataru. अभी जो ट्विस्ट ये आया है कि कारिन पास्ट में ट्रैवल करके गया. Major General Karin, but apparently Major General Fubuki doesn't know. I see. Then I guess he really isn't. We don't have any other leads at the moment, so let... अच्छा टुमुरागी टूम शायद अगला फेज है या फेज 11 छोटा सा था एक ही एपिसोड में खत्म हो गया. ठीक है तो या ट्विस्ट में ये बता रहा था कि मतलब कारिन एक्चुअली 2000 ईयर्स पीछे गया, उसने याकुमो सुमुरागी को मारा एंड उसके बाद उसकी जगह ले ली मास्क पहन के और उसके बाद जो क्रायो स्लीप में जो एक्चुअली में अभी तक जिंदा होगा वो कारिन होगा, यानी कि पास्ट वाला कारिन. तो हर बार ये लूप कैसे चल रहा है कि प्रेजेंट वाला कारिन पास्ट में जा रहा है एंड फिर वो याकुमो सुमुरागी को मार के क्रायो स्लीप में अभी तक जिंदा पड़ा है वो अंडरग्राउंड में. तो अभी हम बस उसे ही सुमुरागी टूम में उसे ही ढूंढने जा रहे हैं. अभी नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा उसमें हम सुमुरागी टूम जाएंगे प्रोबेबली. ओके सेव कर लेता हूँ मैं. अच्छा मुझे लग रहा है कोई ये खुले होंगे बॉन्ड मिशंस, तो वो तो मैं ऑफ रिकॉर्डिंग करूँगा. बॉन्ड मिशन ऐसे टाइम पास होते हैं एंड उसके बाद हम अगले एपिसोड में नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे. या बॉन्ड मिशंस खुले हैं कुछ. ओके तो एपिसोड रैप अप करते हैं. आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.